Question hour, question number 31. Question number 31. No, we'll accommodate. We'll accommodate. Honorable Minister. Shri Sasmit Patra. Thank you, Honorable Chairman, sir, for this opportunity. Firstly, sir, I'd like to thank the Honorable Minister for the efforts made in terms of reducing the trade deficit between India and China in terms of the trade that's really happening. And as compared to 2013-14, as the Honorable Minister has mentioned, the trade deficit has come down in terms of the percentages, though absolute terms, it's still high. I would like to know from the Honorable Minister, sir, through you, what are the steps that the government is taking to reduce the trade deficit between India and China, and how the PLI measures and the schemes would really help in terms of reducing this trade deficit, and what is the expected forecasted trade deficit in the next few years? Thank you. Honorable Minister. Honorable Chairman, sir, I think it's a very, very important question, but my esteemed colleague is possibly busy in other activities, so we don't have the privilege of having him here to ask me supplementary questions, but I'm grateful that Sasmit ji has highlighted this issue. I'd just like to take a minute, sir, to give a little perspective. India-China trade, if one goes back 22 years, around 2000-2001, was barely $2 billion. Only $2 billion in 2000-2001, and that position continued until 2002-03, where it increased at best to about $5 billion. At that time, the trade deficit consistently was under just about $1 billion. So if I look at 2000-2001, $661 million. 1-2, $1 billion. 2-3 again reduced to $800 million. 3-4, $1 billion. And this was the general trend in Indo-China trade. I don't know what happened after that. It's a matter for debate and research. But suddenly, after 2003-04, the $1 billion trade deficit over the next 10 years increased to $36 billion. And the entire country, in a way, became a large marketplace, inviting substandard, opaquely priced, non-transparent, valued goods into the country in a big measure, because of which our imports increased from 4 billion in 3-4 to 51 billion in 13-14. And in a manner of speaking, we opened ourselves to a large number of dependencies on China, which we have suffered for the years as the economy grew, as the country prospered. We became so dependent on them that products which at one point were India's strength, for example, Honorable Chairman, sir, active pharmaceutical products, APIs, active pharmaceutical ingredients, which India had tremendous strengths on, we used to export to the world. We had plants in India which manufactured high-quality APIs. Sadly, we gave up that entire industry to China and landed up in a situation that when I was discussing the RCEP, at the RCEP negotiations, and I was attacking the Chinese side, that why are you allowing such substandard goods and why are you allowing low price? We don't even have many times any idea how you can make goods at lower than the raw material costs in India. He says, but sir, your industry is dependent on us. If I don't give you these 2 billion, 3 billion of APIs, your $10 billion pharma industry will collapse. And I actually realized that we have over 10, 12 years lost India's competitive strength in very critical areas. And therefore, sir, this government focused on the Make in India initiative, while of course with economic growth and prosperity, the demand for goods is increasing. And we do not have sufficient capacity as yet in India to meet this large demand for goods and services. A lot of capital good industry got killed in that 10-year period. And because of which today for a lot of capital goods, electronics goods, where we never promoted our industry, they all
became dependent on Chinese imports. It is only the Modi government which recognized. The Modi government, sir, it's a very important subject. My honorable friend Jairamji appreciates the gravity of this subject, and I hope you are not holding a brief for somebody who's dumping goods into India. It's important that the country recognizes and realizes how we have become dependent on a country which has inimical interests, and how this government has, through a number of initiatives today, focused its attention on promoting Make in India. Sir, we have introduced production-linked incentive schemes where between semiconductors, where we are giving 76,000 crores, and 24 other sectors where we will be giving as Government of India 1.97 lakh crores as support to Indian industry. For the first time, such large measure of support at the central government level to promote domestic manufacturing, make our manufacturing competitive, and start reducing imports from China. And I'll just give one example, sir. Mobile phones. India used to import almost 100% of mobile phones, sir. We had only 2 plants doing mobile phones in this country. Thanks to the PLI scheme, today we have over 200 companies in the mobile phone ecosystem. And we are now not only producing for India, but we are a large exporter of mobile phones. Shri Premchand Gupta. श्रीमान जी, ये जो क्वेश्चन है, इसमें एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना इज नॉट द सॉल्यूशन. हमारा जो ट्रेड बैलेंस था सर चाइना के साथ 2004-05 में तकरीबन $1.5 बिलियन था, जो अब बढ़कर $115 बिलियन है, $115 बिलियन total trade, and the trade deficit is $73 billion, highest for since last 20 years. In any case, I am not blaming sir. Sir, at one point of time, China के लिए पूरी दुनिया से लोग बड़ी-बड़े MNCs China जाते थे, plant लगाते थे, and China thus became manufacturing hub for the world. We are also dependent on Chinese products. So, sir, what we are doing, PLI scheme you have introduced, and in some cases it is successful also. But, sir, there are companies, because of COVID restrictions and other problems, political issues in China, many multinational companies जो employ करते एक factory 2 लाख लोगों को, 2 lakh people are employed by one factory in China. Supplementary. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सरकार इस बारे में कुछ ऐसा स्कीम बनाए कि ये कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग हब वहां से उठाना चाहती है, वहां से उठाकर हमारे यहाँ ले आए. Honorable Minister. अभी वो वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया वहां जा रहे हैं. तो why can't we bring them here? Honorable Minister. Honorable Chairman sir, वैसे तो नजरअंदाज नहीं कर सकते इस वास्तविकता को कि जो आपने सही कहा 1.5 बिलियन का डेफिसिट अगर हमें विरासत में 2014-15 में 48 बिलियन का डेफिसिट मिलता है तो वो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते. आप ब्लेम गेम की बात नहीं कर रहा हूं. एक देश की क्षमता को ही खत्म कर दोगे तो क्षमता को खड़ा करने में समय लगता है. Honorable Member. मुझे लगता है चोट जरा गहरी पहुंची है. उस समय आप भी सरकार में ही थे, पर अलग बात है ये. जहां तक कंपनियां जो चाइना से रिलोकेट करना चाह रही हैं, ये एक प्रोसेस होता है. ओवरनाइट कोई रिलोकेट नहीं करता है, ओवरनाइट कोई कंपनियां बंद नहीं करता है. अमेरिका ने भी कोई वहां से खरीदना ही बंद नहीं किया. हम एक एक प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट निजी क्षेत्र के साथ चर्चा करके हमने एक स्केल कमेटी बनाई, स्टीयरिंग कमेटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ लोकलाइजेशन एंड प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स स्केल. ये पूरी निजी क्षेत्र के लोगों के साथ सलाह मशुरा करके आइडेंटिफाई किया गया क्या क्या कॉस्ट डिसएडवांटेज के एक एक बिंदु है और कितना सपोर्ट देने से भारत का उद्योग खड़ा हो सकता है. उस हिसाब से करते हुए ये PLI स्कीम्स डिजाइन किए, कोई विम्स एंड फैंसीज से नहीं बनाई. सिमिलरली चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के माध्यम से लोगों के लिए आउटरीच करना, देखना कौन अनाउंस कर रहा है नए प्लान्स,
मेरे कलीग अश्विनी वैष्णव जी ने एक बहुत बढ़िया सेमीकंडक्टर को प्रमोट करने की पॉलिसी पहली बार इस देश में हुआ होगा कि 76,000 करोड़ सिर्फ एक सेक्टर के, क्योंकि हम चाहते हैं हम आत्मनिर्भर भारत को बल दें। इसी प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तरह तरह के हमने स्टेप्स हैं। आप चाहो तो मैं तो 1 घंटे का उद्बोधन दे सकता हूं, पूरा क्वेश्चन आवर खत्म हो जाए। डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ लॉस, हर छोटे बड़े काम पे व्यापारी को, उद्योग को जेल में डालना या जेल में परेशान करना ना पड़े, उसको एक हिम्मत मिले कि हम व्यापार कर सके। बैंकों को मजबूत बनाना, किस हालत में हमें बैंक्स मिले थे 2014 में, सबके सब एवरग्रीनिंग और एनपीएस के बोझ में दबे हुए थे। एक एक चीज को ठीक करते करते आज ये स्थिति बनी है कि देश भी मजबूत हुआ है, और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसके आधार पर अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स देश ने तैयार किए हैं। इसमें हम सबका रोल रहा है। मैं समझता हूं सभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब देश को एक मजबूत ताकत बनाया, विश्व शक्ति बनाई। Before I call upon John Britas, I would like to say it is age-old wisdom. Brevity is the soul of it. And it applies to everyone, including me. And I would urge everyone, the more homework we do, the brief we will be. And I'm sure, one second. The Honorable Minister has been very focused, so don't take it that way. The points are well taken from all sides. I would now call upon John Britas. Thank you, sir. Sir, you came to brevity only when it came to me. Sir, the Honorable Minister is very erudite, ebullient, and bit smart and clever too. Sir, in his answer, sir, in order to blame the UPA, he talked about the percentage of increase. That's from, say, 2,346% increase has happened. He is from the financial sector. Conveniently, he picked up the percentage here, and he forgot the quantum. Sir, Prem Gupta ji talked about 73 billion US dollars trade deficit. Sir, that's not the true picture. This year, the trade deficit is going to be all-time high. It's going to touch 100 billion. Despite the so-called Atma Nirbhar and this incentive scheme. Sir, my question, specific question to you. This trade deficit cannot be dealt in isolation. It's part of the ecosystem. The GDP results have come for the first half year, and it says that there is a dip in the manufacturing sector. It means that we are on the wrong path. And there is a Parliamentary Standing Committee report in front of him which talks about the so-called deficiencies which Sir, my question. Sir, it has to respond. Sir, yes, sir, brevity. So the Parliamentary Standing Committee talked about the deficiencies, administrative and regulatory hurdles, inadequate and costly credit facility. What is that he is going to do to improve the ecosystem and also to act on the specific suggestions of the Standing Committee? Honorable Minister. Sir, in a way, the Honorable Member has confirmed exactly what I said. The fact that India became so helpless and our manufacturing sector became so weak that having inherited a 48.4 billion trade deficit in the first year itself, we have in fact been able to really rein in the deficit and not allow the runaway increase that was allowed by the earlier government. Having said that, sir, the fact that the current year trade deficit is going to be high is a sign of growing economic activity also. The fact that our imports from China largely emanate from intermediate products on which we process and add value to for further re-export or consumption in the country. The fact that we are importing a lot of machinery shows that the country now has started investing
and gross capital formation in the country is increasing. The fact that we are increasingly consuming more goods will give confidence to new investors to invest in manufacturing, which Prem Gupta ji just mentioned, so that there's more manufacturing domestically. So this is a cycle. Investors keep watching what is the demand, what is the consumption pattern. And when they see demand, when they see consumption, they import capital goods, because unfortunately we've killed capital good industry in that 10-year period. We are now encouraging even manufacture of machinery. We are seeing a revival of domestic indigenous startups coming up with very, very good, bright ideas to promote Make in India. On the other thing about cost competitiveness, sir, the government has made a lot of effort on ease of doing business, decriminalizing laws, reducing the logistics costs. PM Gati Shakti is a unique initiative unparalleled in the world, by which we can do smarter and timely implementation of infrastructure projects and bring down logistics cost. Question number 32, Sri Abir Ranjan Biswas. Sir, question number 32. Honorable Minister. जी जवाब दे रहा हूँ टेबल पर बोला Supplementary one. Sir, as the reply given by the minister, it seems that for the nutrition of children, especially we know that milk is the chief source, he seems to be heavily dependent on the Poshan scheme, as per the reply. Sir, I would like to bring to the notice of the minister that this scheme has not been a very good success. Having a target of arresting stunted growth to 25% by 2022, the current NFHS 5 figures show that it has only achieved 35.5%. That's just an example, sir. So, what my question is, does the Honorable Minister, since I'm again repeating, milk is the chief source of nutrition for under aged children, does the Minister, it has said that he does not regulate, the government does not regulate the milk prices. Does the Minister intend to do something more to help out in these cases the people of the lower income group? Yes, the children of the lower income group. Honorable Minister. Milk prices traditionally in the country have been deregulated, are determined by demand and supply, and also we must bear in mind that half the country's population is associated with the agriculture sector, and income from dairy, income from the milk produced by them, is a very important supplementary income that helps the farmers of this country, that helps our annadatas to provide a better future for their children. Having said that, sir, the government is very conscious of its responsibility towards the nutrition of the children, and therefore we are implementing the Poshan Abhiyan under the Ministry of Child and Women Welfare, which provides support for children under 6 years of age. Supplementary two. Second supplementary. Sir, I'm going for the second supplementary, but as I said, the Poshan Abhiyan has not been a good success. So I was asking if government intends to do something more. Okay. Anyway, no, sir, there's the second part. This is the first part. Okay. Have only one part. Sir, so the second part, sir. Now, as per the answer, and as per several news articles, the milk inflation increased to 7.7% in October 2022. I would like to know whether the minister has requested or intends to request the finance ministry to remove the 5% GST on curds, lassi, buttermilk, and 12% GST on condensed milk, butter, ghee, cheese, etc. for easy accessibility for the lower income groups. Thank you, sir. Well, the question doesn't relate to me directly. It's a matter of the finance ministry, along with the finance ministers of all the states. GST Council is not of the central government. It's a council of all states which collectively takes decisions in their collective wisdom. I would like to share with the honorable member that a lot of this emanated from the demand from industry itself to have a small GST component, because a lot of the inputs that were going in for packaging, for transporting, and the entire distribution chain for milk products had GST being paid on them, and they were losing the input credit. So really the consumer prices have not gone up at all because of GST. They have been able to take the benefit of input GST credit and netting it off against the GST imposed. So I think the
it'll be good if the honorable members study the impact of GST in the context of input credit also. Santosh Kumar. As per the annexer attached to this answer, it is evident that in most of the states, these prices have shoot up. So I would like to ask the minister, is there any corresponding increase in the income of farmers, Honorable Minister. producers? Honorable Minister. Chairman, sir, since I've given 3 years data, you will find that the increase over 3 years is not very significant. By and large, prices have been stable. It's only recently, because of global situation and the fact that the demand is increasing significantly, that prices have gone up in a small measure. We are still monitoring the situation to ensure that it's orderly. We are fortunate to have the Cooperation Department and Cooperation Ministry now as a separate ministry, which is supporting the cooperative sector in processing, helping farmers get the major chunk of income coming out of sale of milk, and supporting the farmers in a big way. So Amul, for example, from Gujarat, has been a big success story, which has helped farmers, particularly women farmers, get income out of the sale of milks. So the fact that the milk prices have gone up slightly is actually supplementing the government's effort to support an increase in income and doubling the income of farmers. Ghanshyam Tiwari. मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा। Question supplementary. हाँ सब यस सर पूछ रहा हूँ कि भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है, पर मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि भारत में प्रतिदिन कितना दूध उत्पन्न होता है और कितना दूध बिकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिलावट उसमें होती है, किसानों को इसी से नुकसान है। ऑनरेबल मिनिस्टर। सही बात है। वास्तव में बधाई के पात्र तो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, हमारे एनिमल हस्बेंड्री अफेयर्स मिनिस्टर, और दूध बड़े पैमाने पे भारत में बनता है और वास्तव में विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश बनने का गर्व तो मुझे लगता है पूरे सदन के हर सदस्य को होना चाहिए। इस बात का गर्व, मिलावट कोई जानबूझ के नहीं करता है। मिलावट के बारे में जानकारी जैसे ही कंज्यूमर अफेयर्स में या कोई डिपार्टमेंट में आती है तो मुझे मेरा पूरा विश्वास है कि वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसका कार्रवाई करता होगा। अवश्य उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी से हमारी व्यवस्थाएं काम करती होंगी, लेकिन अगर माननीय सांसद महोदय को कोई विशेष जानकारी है कि कहाँ मिलावट हो रही है, कौन कर रहा है, तो हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। रही बात दूध के उत्पादन की, आज दुनिया में हम सबसे बड़े 23% दूध का उत्पादन करते हैं और 1984 लाख टन यानी लगभग 2000 लाख टन दूध का उत्पादन 2021 में हुआ, जिसका शुल्क वैल्यू 8,32,000 करोड़ रुपए और अधिकांश ये पैसा सीधा किसानों के। ओके। राघव चड्डा। सर दूध के दाम जब बढ़ते हैं तो किसान का बजट और देश के आम परिवारों का घर का बजट भी बिगड़ जाता है। राघव चड्डा जी, मैं किसान पुत्र हूं। आप तो हैं ही सर, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। सर दूध के दाम बढ़ने का एक मुख्य कारण, सर मैं एक मिनट बस, मैं मंत्री जी का ध्यान भी चाहूंगा सर दूध के दाम बढ़ने का एक मुख्य कारण यह रहा कि फॉडर प्राइसेस इस देश में पिछले 2-3 साल में खास करके बहुत बढ़े हैं। अभी गुजरात का जिक्र हुआ, गुजरात इस देश के दूध के उत्पादन में सबसे आगे है, बिल्कुल सबसे आगे है, लेकिन उस गुजरात में भी पिछले 2 साल में फॉडर प्राइसेस का जो एरिया अंडर क्रॉप था वो 1,36,000 हेक्टेयर से गिर गया। मेरा सवाल यह है कि भारत सरकार को इस बात का अंदाजा था कि फॉडर प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने आज से 2 साल पहले एफपीओ नाम का एक प्रपोजल, मेरा सवाल यह सर 100 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 100 एफपीओ सेटअप करने के लिए भारत सरकार ने एक प्रपोजल मूव किया था आज से 2 साल पहले।
2 साल में एक भी एफपीओ रजिस्टर नहीं हुआ, जो सिर्फ फॉर्डर प्राइसेस और फॉर्डर प्रोडक्शन पे ध्यान जिसको देना था, जिसका मुख्य ऑब्जेक्टिव ये था। मैं एफपीओ के बारे में पूछना चाहूंगा। तो अच्छी बात कही माननीय सदस्य ने, अगर झूठे अफवाहें और नारेबाजी के बदले वो खुद थोड़े एफपीओ ही बना देते तो देश का बड़ा भला होता। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार लगातार फॉर्डर के ऊपर भी नियंत्रण रखती है। पीछे जब फॉर्डर की कमी महसूस हुई तो उस पर इंपोर्ट अलाउ कर दिया गया, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की जरूरत पड़ी तो उस पर भी सरकार ने विचार किया। एक सरकार लगातार नियंत्रण रखती है कैसे कीमतों को कंट्रोल में रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 33, श्रीमती शांता छेत्री। सर, माय क्वेश्चन नंबर 33। दिया गया हाँ जी। Supplementary one. Sir, my first supplementary question is under Prime Minister Textile Region and Apparel. Will the Honorable Minister, through you, sir, answer specifically the fund allotted and project detail for Darjeeling and Kalimpong district? Thank you, sir. Specifically बोला गया। Honorable Minister. सर, सबसे पहले तो आज मुझे मौका मिला है कि अपर हाउस में आपके अध्यक्ष होने के बाद में ये पहली बार है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि यही खंड है जहाँ हम नए मंत्री चाहते थे हमारा अच्छे से इंट्रोडक्शन हो जाए, लेकिन हुआ नहीं था। और आज जो सवाल यहाँ से आया है कि टेक्सटाइल रिलेटेड, उन्होंने जो 2 सवाल किए हैं उनका जवाब दिया है, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल के लिए क्या चाहती है और कौन से विषय में चाहती है। तो मैं संरक्षण आपका इसलिए चाहती हूं कि टेक्सटाइल मंत्रालय ने क्या किया है और उनका कंसेप्ट क्या है, क्योंकि उनके दूसरे प्रश्न में, पूरक प्रश्न में भी पूछा गया है कि जो पीएम मित्रा पार्क बनने वाला है इसमें क्या हमारा स्टेटस है। तो टेक्सटाइल रिलेटेड जितनी भी योजना अब तक भारत में बनी, इसमें 2 प्रकार की चीजें हुई कि सिर्फ कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री के बजाय हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, रेशम, जूट और इसके साथ में मैनमेड फाइबर के लिए हम सब ने योजना बनाई। और जब मैनमेड फाइबर के लिए जो योजना बनाई, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हम लोगों ने ये पीएम मित्र स्कीम का इंट्रोडक्शन हुआ, तो एक पैमाने पे इकोसिस्टम से एक ही साथ में ये प्रोडक्शन मैनमेड फाइबर का हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने ये स्कीम तैयार की। और इसमें 13 राज्यों से प्रपोजल आए और 13 में से 7 राज्यों को इसमें पीएम मित्रा पार्क के लिए इसमें सम्मति दी जाएगी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये पार्क के लिए भी पश्चिम बंगाल से कोई प्रपोजल नहीं आया। दूसरी बात कि जो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्ट के लिए जो पैसे अब तक दिए गए हैं, इसमें कई सारी स्कीम है। माननीय जो सदस्य का प्रश्न है ज़्यादातर रेशम के लिए है, सिल्क के लिए है कि 4 प्रकार के सिल्क जो प्रोडक्शन होती है, तो यहाँ प्रोडक्शन से लेके जहाँ उनकी कोकुन के साथ में उनकी खेती भी हो जाए, फिर उसका ड्रिलिंग हो जाए, इसे अच्छे उसके सेंटर बने, उनको लेटेस्ट मशीनरी मिले, और इसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट से प्रपोजल होनी चाहिए जो आज तक आई नहीं है। और सबसे अच्छी बात कि हमारे यहाँ सभी हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन, जिसका हमें बहुत महत्व होने वाला है G20 समिट में भी, आप भी कहीं जाते हैं तो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट की चीजें लेके जाते हैं, लेकिन आर्टिजन कार्ड ही नहीं बने हैं। वहाँ कितने लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जो केंद्र सरकार की योजना में मांगे गए हैं, वो उन्होंने नहीं बताया। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, my second supplementary question is whether the Textile Ministry on its inspection found Darjeeling or Kalimpong district suitable for setting up of a Prime Minister Mitra Park. If yes, can the proposal still be sent by the state government? And if yes, the last date of submission of the proposal. Thank you. Honorable Mr. वही बताया क्योंकि यहाँ से प्रपोजल आई नहीं है। प्रपोजल आएगी तो वो स्टेट में से डेट भी चली गई। 51 ये जो 51% शेयर राज्य सरकार का होता है सेटअप करने के लिए, और बाकी केंद्र सरकार के सहयोग से ये पार्क लगेंगे। और इसमें टेक्सटाइल पॉलिसी, लेबर पॉलिसी, इसका सब भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन वहां से प्रपोजल ही नहीं आई है। थैंक यू। श्री अनिल बोंडे। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं
कि 13 राज्यों से जो प्रस्ताव पीएम मित्रा के लिए भेजे गए हैं उसमें महाराष्ट्र की तरफ से संभाजीनगर औरंगाबाद तथा अमरावती नांदगांव पेट के 2 प्रस्ताव गए हैं। तो ये पीएम मित्र की जो योजना है ये कब से कार्यान्वित होगी और उसका कार्य प्रभाव और रोजगार निर्मित किसानों को फायदा महाराष्ट्र में ये 2 प्रस्तावों के बाद में कैसा होगा उसके बारे में जानकारी दी। महाराष्ट्र से 2 प्रपोजल आई है, एक ग्रीनफील्ड के लिए, एक ब्राउनफील्ड के लिए, और इसके लिए राज्य सरकार से समन्वय करके जो राज्य सरकार लेबर पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, इसके साथ में और इकोसिस्टम से 1000 एकड़ जगह जहां पे हमारी इंस्पेक्शन चल रही है और जो एजेंसी के माध्यम से ये इको पार्क डेवलप होगा जिसमें सभी प्रकार की सुविधा साथ में, क्योंकि ये वैल्यू चेन वाला प्रोडक्शन है तो सब लोग एक साथ में अच्छे से बिजनेस कर पाए, तो ये करके हम लोग उनको मंजूरी देंगे। श्री के RN Rajesh Kumar. Honorable Chairman, sir, Virudhunagar in Tamil Nadu is identified for setting of a PM Mitra Park. Officials from the Ministry of Textiles have already visited the place. Will the Honorable Minister be pleased to state the current status of the PM Mitra Park, Textile Park at Virudhunagar project? Thank you, sir. Honorable Minister. मैंने बताया कि सभी 12 स्टेट से 13 एप्लीकेशंस आई है और इसके लिए राज्य सरकार से हम लोगों ने कुछ बातें करी है कि जिसमें टेक्सटाइल पॉलिसी होनी चाहिए, लेबर पॉलिसी होनी चाहिए, पावर पॉलिसी होनी चाहिए, जो अच्छे से वो सपोर्ट करेंगे उसी को ये पार्क मिलेगा। श्री इलामारम क्रीम। अलार्म क्या है? इलामारम क्रीम। You can use the other, you can now use both. Yes. Honorable Minister has explained various schemes for capacity building in textile sector. My specific question is, what's your plan to revive National Textile Corporation mills which are lake coast? Question number 34, Shri जोश के मनी। बहुत बढ़िया नहीं है, मतलब दर्शना में Honorable Minister. A statement is laid on the table of the House. Supplementary one. Yeah, right. Sir, Kerala has gone through 2 consecutive floods in 2018 and 19. We not only lost the lives of hundreds of people, but also their lives and their livestock and agriculture. During 2018 disastrous floods, the center has allotted 89,540 metric tons of rice to distribute through PDS as flood relief. It is learned that the center has demanded to pay 205 crores for the food grains supplied during the emergency. Pointed question. Sir, my question is how this demand can be justified by the sender as the food grains were distributed among poor people and casualties during the worst natural disaster of Kerala. Okay, Honorable Minister. This subject does not relate to our ministry because every state is given support by the center for any such natural disasters that may occur. Funds are given by the center to all the states of India, and they are expected to meet such requirements of any natural disaster out of those funds. Odisha has had so many cyclones, Gujarat has had cyclones and typhoons, Maharashtra has had them, Andhra Pradesh has had them, West Bengal has had them. Every state, through their SDRF and NDRF, meets the requirements of such a nature. I think Kerala should not be an exception. And they have received the funds from the center. Kindly utilize those funds to give relief to your people. Second supplementary. Actually, it is during the emergency time. Anyway, the second supplementary is, in 2022, India has been ranked 107 in the global hunger index out of the 121. The neighboring countries like Nepal, Pakistan, Sri Lanka, all in front of us, and Afghanistan, only country is behind us. Sir, though the government has continuously questioned the methodology used to bring these index, the prevalence of hunger and poverty in the country is well seen.
My question is, has the government found out the reason behind this mismatch between the excess stock of food grains and the prevalence of hunger in the country? Does the government have any plans to address the critical issue which affects the millions of poor people? Honorable Minister. The proposition he has made that food grains were supplied to Kerala and therefore it should not be charged is wrong. NDRF, SDRF is required to pay for the food grains or any other supplies that you may take from anybody else. The food grains were given to Kerala on the premise that they will pay for it. Now they are changing their mind. It's an abject failure of the state government to meet the needs of their people, which has been exposed by my colleague, Mr. Mani. As regards the hunger index, first of all, the name itself is a misnomer. The fact is that every state of India, sir, Honorable Chairman, sir, every single state of India has given it to us in writing that thanks to the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, where we supplemented 5 kilos of additional grain over and above National Food Security Act entitlement, we have in a way eliminated hunger or starvation from this country. Every state has written that not a single death due to starvation occurred over the last 2 years. We have it in writing, including from your state of Kerala. Yes, sir. This hunger index is a private index made by some private NGO based on subjects which are not related to hunger. Okay. So they have to first decide what the nomenclature should be. The statistics are drawn out of data which is unverified and also on measures or measurements which don't relate to India. For example, the wasting, stunting figures that take up are just completely not related to Indian features of an Indian person. So I think it's important that we recognize what is official and validated and what is mere propaganda. Honorable Minister, I'm slightly making a point. In our country, iconic status is granted on parameters that are often baffling. And we have calibration by agencies that do not have any rationale. This august house is repository of the wisdom of 1.3 over billion people. We therefore, when we raise an issue in this house, that there is a calibration by an agency that should not carry much conviction unless the honorable member or the honorable minister is premised on our own record. Let us believe in our own worth. It will be very difficult and inappropriate for us to surrender our assessment, our achievements to be assessed by those who have either inadequate data or are dictating their actions by their interests, not ours. Shri Sanjay Singh, 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 Shri Sanjay. I think I would, one thing before, I think every time I say something and drop off a hat, we get adversarial stance. Try to digest what I have said, sir. We must analyze the calibration. We will have respect for... One second, please take your seat. Take your seat. Dr. Jairam Ramesh, take your seat. What I have said is rational with a rationale. And that rationale is, we should not be captive. We are a part of global unity. One second, sir. Sir, don't interrupt the chairman at least. Please, I understood it. So I would, one second. I would urge everyone that there are some issues which we need to reflect overnight. I would have individual interaction with all of you. I am very categorical. Our country cannot be allowed to be hurt by calibration from outside on premise which we do not believe in. That does not mean the calibration outside has no credibility. We will have to get into those areas
I'll come to the question now, Shri Sanjay Singh. Confined to the question. धन्यवाद मान्यवर। सबसे पहले तो मैं आपको हृदय से बधाई देना चाहता हूं। पहली बार आपके समक्ष बोलने का अवसर मुझे मिला है और आपने इस विषय पे मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, भारत की राशन वितरण प्रणाली मजबूत होनी चाहिए, ये हम सारे लोग इस बात पे सहमत होंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारी राजनीतिक मत भिन्नता हो सकती है मान्यवर, लेकिन राशन वितरण प्रणाली में राशन के दुकानदार कितनी गड़बड़ी करते हैं, इस सदन का हर नेता इस बात को जानता है। क्वेश्चन मैं इसी पे आ रहा हूं सर। पूछिए। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घर घर राशन पहुंचाने की योजना अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई, जिससे कि राशन वितरण, देखिए हंस रहे हैं गरीब आदमी को, गरीब पे हंसते हैं ऐसे सर। क्वेश्चन पूछिए। ये सब जानते हैं कि राशन वितरण प्रणाली में धांधली होती है। मान्यवर, घर घर राशन पहुंचाने की योजना को आप मंजूरी क्यों नहीं देना चाहते, इसको आज सदन में स्पष्ट कीजिए। गुड क्वेश्चन। योगा को आप मंजूरी नहीं देते, राशन पे आप मंजूरी नहीं देते, आप चाहते क्या है? गरीब को राशन क्यों नहीं देना चाहते? महोदय, मैं भी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी बड़ी विनम्रता से बताना चाहूंगा कि देश में कानून व्यवस्था है कि आप दोनों विनम्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी विनम्रता से आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि देश में एक कानून है, कानून व्यवस्था से देश चलता है और कानून ने प्रावधान ऐसे बनाए जिससे कोई भी राज्य सरकार अगर धांधलेबाजी करना चाहे तो उसको रोका जा सके, और यही दिल्ली की स्कीम कोर्ट द्वारा नामंजूर करी गई है। सरकार, एक मिनट सर, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से, क्योंकि इनको गलतफहमियां ठीक करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया है कि फ्री फेयर प्राइस शॉप भी राज्य सरकार के अंतर्गत चलती है। एक्शन क्यों नहीं लेते अगर वो गलत काम कर रहे हैं? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसमें एक्शन ले, और ये घर घर के नाम पे चोरी करना चाहते हैं। दिल्ली की सरकार हर चीज में चोरी करके धांधलेबाजी से गरीब का अनाज चोरी करने का एक नया प्रयोग, पहले दारू में चोरी, अब अनाज में चोरी, ये चोरी की सरकार चोरी को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहती है। मंत्री जी बैठिए, सुभाष चंद्र। I have a point of order. I have a point of order, sir. This is in relation to rule 47, sub rule 2. Rule 47, sub rule 2 says the right to ask a question is governed by the following conditions, and there are 22 conditions. For the person who will raise the question, for the honorable member who will raise the question, but there is no such conditionality insofar the ministers are concerned while giving the reply. Just now, I have found, this House has witnessed, that in reply to a supplementary question of Honorable Member Mr. Sanjay Singh, the Honorable Minister characterized the state government as a chore, thief government. Whether this is admissible under the rules, I put it for your kind consideration. There are two things I need to indicate. One, there is no point of order during this tenure, this period. Am I right? Yeah. But you have allowed. Question hour. Sir, you have allowed. One. With your consent, I have raised the point of order. There is no question of point of order in question hour. Number two, the honorable member has
raised an issue which we all must consider. I'll look into it. Yes. I'm so. Thank you, sir. Sir, my Subhash Chandra Pilli, please. Yes, yes. Not mine. Thank you, sir. I was appreciating your patience, but the patience continued beyond a limit. Sir, Go ahead. I am putting my straight question, sir. Can the Honorable Minister state the reasons why the targeted public distribution system in Andhra Pradesh covers only 61% of rural and 41% of urban population, when compared to the stipulated coverage of 75% rural and 50% of urban population under National Food Security Act? I also request the Honorable Minister to revise the coverage of beneficiaries by TDPS and NFSA as recommended by Niti Aayog. Honorable Minister. This is unfortunately a legacy of the very ill-drafted AP Reorganization Act, in which a lot of questions were left unanswered. It was done in a hurry, because of which, when the allocation of free food grain between Telangana and Andhra Pradesh was decided, it was probably not very scientific, and Andhra Pradesh feels that they have been unjustly deprived of the right amount of coverage. Telangana was given a greater share compared to Andhra Pradesh. It was done before this government came in. It was based on the census of 2011. And ideally, when the census of 2021 happened, we would have been able to look into the matter afresh. Unfortunately, due to the COVID pandemic, we have not yet been able to conduct the census. I'm sure, and I have assured the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh during several conversations, that when the census data, current census data comes out, we will know exactly which state should get what quantity. I received it as a legacy. Was probably done in a hurry, but sadly it's beyond my power under the NFSA to change it. Thank you, sir. Shri, based on 2000 census. If only you can conduct the census, Shri this problem Jawahar will not have Sarkar. arisen. You are repeatedly Shri Jawahar Sarkar. Sir, for this opportunity, I have only one simple and sharp question addressed to the Honorable Minister. Are we heading for a food crisis? I have figures with me. We have stocks, usually stocks of about 25 million to 26 million tons of wheat at the beginning of the year. We have around 29 to 30 million tons of rice at the end of the year. And last year's procurement was an all-time record, last year's procurement. But in this current year and in the previous year, we have consumed a lot thanks to the Prime Minister's Yojana scheme, the free food scheme. The net question is that both wheat has been impacted, sir. As you know, wheat has been impacted by the heat wave and other factors. And, sir, rice, paddy has also been badly impacted. Honorable they have Minister, been the question has been asked. reflected on the procurement figures. Honorable So we Minister. are in a shortage state. We are in a shortage state, Honorable Minister, Honorable and I Minister, would like government question is very to clear. admit it and take steps. Honorable Chairman, sir, that question is in two parts. I'll give a sharp and short reply for the first part. Sir, give short, polite, and Very modest. polite, sir. Sharp may be avoided. Have you seen me ever lose my temper in any of the question answers, No, sir? I know Jawahar Sarkar ji, he will not take a sharp reply. He will take a modest reply. Okay, so I'll, with all due modesty, sir, share with the honorable members through you, sir, that the country, thanks to the very deft management of the economy by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, will not face any food shortage in the years to come. Yes. I can assure the honorable member, we are carefully calibrating and managing our stocks of buffer stocks, of rice, wheat, of different other products where we have buffer stocks on pulses. We are very deftly managing and calibrating import duties, export duties to ensure that our stocks remain intact.
And while the world may face a food deficit, fortunately, because we are monitoring it on a daily basis, with the Honorable Home Minister, Mr. Amit Shah, heading a group of ministers continuously monitoring inflation and stock levels and other associated fiscal and monetary measures, we have been able to control scarcity as well as control inflation. As regards this other point on buffer stocks, our buffer stocks are within norms despite, as I said earlier, doubling the food allocation. Nearly 1,100 lakh metric ton of rice and wheat has been distributed free of charge to 80 crore people. It's a humongous quantity. Thanks to the record procurement, we were able to feed every single person, and as I said earlier, zero starvation deaths. Yes. And I'm sure you'll appreciate that Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, particularly in the stress of COVID, was one of the most important schemes that saved the country. Honorable Vice President, Chairman Sir, you yourself have received accolades in your international visits about this scheme, sir. Question number 35, Shri Ajit Kumar Bhuyan. Question number 45. Honorable Minister. Statement is laid on the table, sir. Supplementary one. From Honorable Minister's reply, I came to know that there was an inquiry or investigation on the aspect of irregularities in the construction work. But now I would like to know that if there is no construction defects, then how the part of the Lamjung-Silchar portion of track, which is the only connectivity of Barak Valley of Assam and to the states of Tripura, Manipur and Mizoram, is washed away during the rainy seasons everywhere, leading to untold misery to the people of these areas. Honorable Minister. And another point, and the same question, that Northeast Frontier Railway... Let the Honorable Minister respond. No, sir, this is the same question, sir. Part of the same question. You get one more supplement. You get one more supplement, Honorable Minister. सर, पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके डीप विजडम और लॉ की जो बहुत वास्ट नॉलेज है और पब्लिक सर्विस में आपका जो लंबा अनुभव है उससे इस हाउस को बहुत फ़ायदा होगा सर, बहुत बेनिफिट होगा और नए हाइट पे पहुंचेगा यहाँ पे डिबेट सर। मैं क्वेश्चन के आंसर पे आता हूँ। लमडिंग सिल्चर गेज कन्वर्जन का जो काम हुआ था सर 1996 में सैंक्शन हुआ था, 2010 से 2015 के बीच में इस पे काम हुआ था। माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है कि क्या इसके ऊपर कोई इंक्वायरी हुई थी और इंक्वायरी में अगर कुछ नहीं मिला तो वॉश आउट क्यों हुआ, ये आपका प्रश्न है। इसमें इंक्वायरी हुई थी सर, सीवीसी के एक पूरा पैनल बनाया गया था, उस पैनल ने जाके इंक्वायरी की थी, इंक्वायरी में कुछ भी नहीं मिला था और इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट अगर आ जाता किसी के जानकारी में हो तो हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जो मई में बहुत ज़बरदस्त एक साथ क्लाउड बर्स्ट जैसी बारिश हुई उसके कारण नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी जगह रेलवे लाइन, हाईवे, प्राइवेट हाउसेस, फार्म लैंड्स सबको डैमेज हुआ था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जानने की सर कि मई में डैमेज हुआ विद इन अ पीरियड ऑफ some 38 to 40 days, entire network was restored in a record time with very good efforts by the entire team, including the state government and the central government together. Sir. Second supplementary. I would like to know that is there any lapses, are there any lapses in planning or execution? And at the same time, whether any inquiry has been conducted to ascertain the cause of massive damage in the section in the recent flood, and how much amount had to expended to put the railway traffic. Honorable Minister. मई के महीने में जो बारिश आई थी, it was almost like a cloud burst. और केवल इस सेक्शन की बात नहीं है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में विशेषकर जो आसाम और मणिपुर के कुछ एरियाज हैं
उसमें बहुत वास्ट डैमेज हुआ था, बहुत बड़े फ्लड्स थे। इसके लिए जो राज्य सरकारों ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके जो काम किया, उसको सबसे पहले अभिनंदनीय है सर वो काम। इतनी बड़ी मैसिव फ्लड में भी एक बहुत ही मेथोडिकल तरीके से, एक बहुत ही अच्छे तरीके से, एक प्रॉम्प्ट रिस्पांस से काम हुआ है। रिस्टोरेशन वर्क पे फोकस किया गया। और जो माननीय सांसद पूछ रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम आई, सर कोई भी नई रेलवे लाइन जब भी बनती है उसको स्टेबलाइज होने में करीब करीब 10 से 12 साल लगते हैं सर। मनोज कुमार झा। शुक्रिया माननीय सभापति महोदय। माननीय मंत्री जी हैं तो एक तरह से मैं ये कहूं कि ये न थी हमारी किस्मत की विशाल यार, तो आज विशाल यार भी हुआ। मैं चूंकि प्रश्न इससे संबंधित नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं कि रेलवे का मामला है, मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूं, हजारों की संख्या में जिनके रिक्रूटमेंट की सारी प्रोसेस हो गई थी टेक्नीशियंस की, उनमें से अभी भी स्टैंड बाय और वेटिंग क्लियर होना बाकी है। क्योंकि रेलवे हमारे लिए सिर्फ व्यावसायिक उद्यम नहीं है, रेलवे के पीछे सामाजिक सरोकार है, इस पर ध्यान दें माननीय मंत्री महोदय। टोटली अनरिलेटेड क्वेश्चन है, फिर भी मैं मान्य सांसद जी की जानकारी के लिए कहना चाहूँगा, आज रेलवे करीब 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कर रही है। आज आप जानिए एनटीपीसी कैटेगरीज हो, ग्रुप डी की कैटेगरी हो, कितना ट्रांसपेरेंटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो रहा है। कहीं पर भी पूरी तरह से चौकन्ने हम लोग कि बाई चांस कोई दलाल बीच में आके प्रॉब्लम भी करना चाहे, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। और जो पुराने वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स थे उसमें करीब 70% कैंडिडेट्स को ऑलरेडी दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 36 सुशील कुमार गुप्ता। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभा पटल पर रख दिया गया। सप्लीमेंट्री 1। फर्स्ट सप्लीमेंट्री सर, माननीय मंत्री जी ने जैसा अपने आंसर के अंदर बताया, 2022 में सप्लीमेंट्री चावल के भाव जनवरी से लेकर नवंबर तक 4 रुपए किलो बढ़ गए। 60% हिंदुस्तान चावल खाता है। पानी की कमी के कारण कुछ राज्यों में चावल की जगह दूसरी खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेरा सवाल है, क्या केंद्र सरकार किसानों को अधिक चावल उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और कैसे करेगी, और पानी वाले राज्यों के अंदर विशेषकर? माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत करवाना चाहूँगा कि चावल की खेती निश्चित रूप से देश के अंदर जो हो रही है उसमें लगभग 31 करोड़ टन है जो पूरा उत्पादन होता है, उसमें से 13 करोड़ टन है वो चावल का उत्पादन होता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि भाव की बात है, तो निश्चित रूप से समय समय पर भाव का उतार चढ़ाव होता है और ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं हुआ है। पहले जितना देखा जाए तो बहुत कम उतार चढ़ाव हुआ है और इसको लेकर सरकार निश्चित रूप से हमेशा सरकार भाव कंट्रोल करने का भी ध्यान रखती है और साथ ही कंज्यूमर का भी ध्यान रखती है और किसान को भी सही दाम मिले, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर सरकार काम करती है। और इसको बढ़ावा देने के लिए और सरकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं, मैंने सेकंड सप्लीमेंट्री रिटेल बाजार में 6 रुपए किलो बढ़ गया, आप कह रहे भी कम बढ़ा और बढ़ेगा। आम व्यक्ति का क्या हालात हो रही है देश के अंदर, ये जानने की बात है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, किसान भी इस परेशानी से जूझ रहा है। किसान की आय बढ़ाने के लिए, विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए, अच्छे चावल की निर्यात की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान केंद्रों पे इस 5 वर्ष में कितने अनुसंधान किए गए चावल की उन्नत किस्म को बढ़ाने के लिए? ऑनरेबल मिनिस्टर। बताते हुए खुशी है कि आईसीआर के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और कई वैरायटियां हैं जो चावल की इजाद की गई है और एक्सपोर्ट की दृष्टि से भी कई नई वैरायटियां इजाद की है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पूसा बासमती के तौर पर भी नई वैरायटियां आई है। इसके अंदर जैसा कि एक हमारी जो वैरायटी है जिसमें RI 64 है और एक RI स्वर्णा भी है और इस तरह से टोटल वैरायटियां हैं वो 8 नई वैरायटियां अभी पिछले 1-2 साल के अंदर नई वैरायटी आई है, जिससे कि वो विदेश के अंदर जाती है। तो कुल मिलाकर कुछ यूरोपियन कंट्री के अंदर एक विषय आया था जिसमें हमारे जो किसान पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं
ट्राइक्लोजोल जो उपयोग करते हैं उसकी वजह से उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। लेकिन अब उसी की ध्यान में रखते हुए ये जो नई वेराइटियां तैयार की है जिसके अंदर जिंक या प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, तो ऐसी वेराइटियां तैयार की है जिसकी वजह से आज उत्पाद जो एक्सपोर्ट है उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। और मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल की बनिस्बत इस साल जस्ट जो 2021-22 में जो एक्सपोर्ट चावल हुआ था वह 1.7 करोड़ टन था, जो इस साल बढ़कर 2.12 करोड़ टन हो गया है। House stands adjourned till 2:30 p.m.